Hello everyone, welcome back to my channel and I hope you all are good. This is my last Victoria trip vlog. I hope you will like it. We started our day with yummy breakfast that was too good. After this we went to Chinatown. This is very small place but so beautiful. I think this place looked very beautiful at night. This is the Royal BC Museum. This is the most famous place to visit in Victoria. In this area, they have a lot of information about the orca fish. And they also show the relation between orca fish and Canadian human culture. This is the brain comparison. One side is human brain and another side is wild fish brain. This museum was very interesting. I really like it, but we didn't have a lot of time, so we only spent 1 hour, but you can easily spend 3 hours. क्रैब अलास्का किंग क्रैब देखो किंग क्रैब ये होता है साइज का होता है किंग क्रैब वो रेड बॉक्स क्रैब ऐसे होता है बॉक्स में बदल जाता है थी This is the human history section. पहले ऐसा था उसमें काम करते कुछ कुछ पता नहीं जाएगा तो मस्त लगता है ऐसे ही करते हैं ना अच्छा ये पहले की लड़की ऐसे थी लड़के ऐसे नेटिव कल्चर का ये क्या है नेटिव कल्चर का ये पता नहीं पढ़ो कुछ है House post. Gold rush era. पानी निकालता है इतनी तेज निकल सकता है सिल्वर लेड जो चमक रहा है ना वो है गलीना है लेड सल्फाइड
क्या स्लेट निकलता है। और क्या बताऊँ, इसमें चमक रहा है, सल्फर का ये है। Our next place was Oak Bay Beach. यहाँ के लोगों के लिए वेकेशंस का मतलब होता है बस बीच पे जाके सन टैन होना और चिल होना, बट हम इंडियंस के लिए बिल्कुल ही अपोजिट होता है। मैं ऑल इंडियंस की बात नहीं करूँगी, बट हाँ, मेरे लिए वेकेशंस का मतलब अगर हम सिर्फ 2 दिन के लिए भी कहीं जा रहे हैं तो मैं तो यही सोचती हूँ कि उन 2 दिन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लूँ चीज़ें, बिल्कुल पैसे वसूल। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप लोग भी मेरे जैसे हो या नहीं। बट हाँ, बचपन में हमारे लिए वेकेशन का मतलब नानी घर जाना होता था और इतने एक्साइटेड होते थे, ओ समर वेकेशन आया या विंटर वेकेशन है, ओके अब नानी घर जाना है, मज़ा आता था। Then we drove to Nanaimo to catch our return ferry to Vancouver. On the way to Nanaimo, we stopped at the Gold Stream Park. This is a small park and lot of people come here to picnic. हाइक करके We also stopped just few more places, just enjoy the natural beauty. Now we are in Nanaimo. Nanaimo is a very small city but is so beautiful. This is the Nanaimo waterfront. We stop here to eat our lunch at fish market. calamari. Now we are going back to Vancouver. And now don't forget to subscribe and share my channel, and we will meet you in my next vlog. तब तक के लिए bye, take care.